शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के नेता भी शामिल हुए। 16 तारीख को ईद मिलाद का मुख्य जुलूस नहीं निकलेगा। आज सूरत पुलिस और शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसला लिया गया कि इस साल ईद का जुलूस हाईवे पर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय अपने अपने इलाकों में जुलूस निकालेंगे। इतना ही नहीं, सैयदपुरा इलाके में हुई घटना के बाद सूरत पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों से अपने बच्चों को जिम्मेदार बनने के लिए उचित सलाह और सुझाव देने को कहा है। मुस्लिम नेता कादिर पीरजादा ने कहा, शांति समिति की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक 16 सितंबर को हाईवे से गुजरने वाला मिलाद उल नबी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बल्कि अपने क्षेत्र में ही निकाला जाएगा या आपकी गली और इलाके में। जो लोग हाईवे पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन कमेटी ने जुलूस की घोषणा रद्द कर दी है। यदि कोई ऐसा करना चाहता है वो पुलिस की अनुमति लेकर स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है। शांति समिति की बैठक में अहम बात यह रही कि इस बार ईद के मौके पर शहर के हाईवे पर जो जुलूस निकाला जाएगा, बाहर न निकाला जाए। सभी ने आपसी सहमति से अपने अपने क्षेत्र में जुलूस निकालने पर सहमति जताई है। सूरत शहर में ईद और गणेश जी का शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सूरत पुलिस शहर भर में 15,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन 17 सितंबर को होना है और 12 सितंबर तक शहर की 12 अलग अलग कृत्रिम जिलों में 6,430 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। संवाददाता अश्वनाथ शिरसाट, BHP न्यूज़ सूरत। બધી જગ્યાએ આપ જોઈ શકો છો, જેટલા બી અમારા પસાર થતા હોય છે સંવેદનશીલ વિસ્તારમાંથી, તો એમાં લગભગ જો અમારા પોલીસના કેમેરાઓ ટોટલ કરીબ અમારા 1600 જેટલા કેમેરા અમારા લાગેલા છે અને સાથોસાથ કોર્પોરેશનના બી કેમેરા લાગેલા છે। ત્યાં અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ MP સાહેબના ગ્રાન્ડ में 300 अलग कैमरा આ વિસ્તારોं में लागेला છે, ફક્ત આ વિસ્તારોं में। तो अपना बात करिए तो लगभग जो 3000 ના આસપાસ અમારા CCTV કેમેરાઓ છે। આ સિવાય ઘણા બધા કેમેરાઓ જે સ્થાનિક નાગરિકો છે, जो પોતાના ઘરમાં પોતાના जो કામ ધંધાના જગ્યા ઉપર લગાયેલા છે, जो રોડ ઉપર બી એના રહે છે, એના બી અમે લોકો એનાથી મદદ લઈને એના ઉપયોગ કરવાના છે। સાથોસાથ जो वीडियोग्राफर જે રીતે મેં बताया, જ્યાં નથી કેમેરા અમુક સ્ટેજ में ત્યાં અમારા वीडियोग्राफर રહેશે। 40 જગ્યા અમે નક્કી કર્યા છીએ और जो टेम्परेरी 2 દિવસ માટે કોર્પોરેશન તરફ से कैमरा लगावવામાં આવી રહ્યા છે। जो भी લાગી જશે તો એક જ્યાં જ્યાં અમે લાગતા કે અમારા ગ્રે એરિયા છે ત્યાં નથી કેમેરા, ત્યાં બી આ લોકો લગાવશે और ड्रोन से आखा पूरा सर्वेलेंस कंटिन्यूअस चालू रहશે कि गलियों में શું ચાલી રહ્યા છે, છતો પર શું ચાલી રહ્યા છે। અને જો અમારી છત વાળા ધાબા પોઈન્ટની जो ટીમ છે, 320 ધાબા એટલે 3-4 માણસો બધા ધાબા ઉપર રહેવાના છે। તો હજારની સંખ્યામાં ધાબા પોઈન્ટ માણસોમાં ડિપ્લોયડ રહેશે। તો એનાથી બી અમે લોકો જોઈને કમ્યુનિકેટ કરીને સ્પેશિયલ ચેનલ નંબર એના આપવામાં આવેલા છે, જેથી કમ્યુનિકેટ કરતા રહીએ અને જરૂર પડે આ રીતે અમે લોકો પગલાં લઈ શકીએ છીએ।